Now, away from that, I want to turn to my top story tonight because we've been tracking the migrant labor over these days. And in another grim reminder of the plight of migrants during the lockdown, 24 migrants have been killed in an accident in UP's Auraiya when they were trying to make their way home. The UP government has suspended 2 policemen after the incident. The Prime Minister's office has announced 2 lakhs each for the next of kin. But there are serious question marks over the manner in which overcrowded trucks have become killer coffins. Take a look. The journey of migrants desperate to get home ended tragically in Uttar Pradesh's Auraiya district after the trailer truck they were on collided with the van in the early hours of Saturday. Prime Minister Narendra Modi expressed grief at the loss of life. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath announced ₹2 lakh ex gratia for the kin of those who had died, even as he ordered a probe and suspended 2 cops. मैं मानता हूं कि बहुत दुखद और दर्दनाक घटना है। मैं श्रमिकों से बार बार अपील करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपील कर रहे हैं कि संयम रखें और उनके यथास्थान पर पहुंचाने की पूरी व्यवस्था सरकार कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्रवाई की है। Yet another accident involving migrants who have been using any mode of transport to go back their villages triggered anger at the plight of jobless workers. यदि सरकार के अधिकारी उनको खाने पीने की व्यवस्था करते हैं तो वो चाय की दुकान पर जाकर चाय क्यों लेते हैं? जिस सरकार के पास 19,000 ट्रेनें खड़ी हों उसके बावजूद भी हमारा गरीब मजदूर बेचारा पैदल चल रहा है। कभी हजारों किलोमीटर साइकिल से चलता है, कभी बस से चलता है, कभी ट्रॉली से पकड़ता है, कभी ट्रैक्टर पकड़ता है, कभी पानी के रास्ते अपने गांव घर पहुंच रहा है। आज जो इन मजदूरों की मौत हुई है पूरी की पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी सरकार की है। In Madhya Pradesh, 6 migrant workers were killed and 16 others injured when the truck they were on overturned in Sagar district. The workers had left Maharashtra and were on their way to homes in Uttar Pradesh. थाना प्रभारी अपने बल के साथ पहुंच गए थे और साथ ही बक्सवाहा से भी टीआई आ गए थे और सभी ने मिलकर ये गाड़ी पलट गई थी, इसको सीधा कराया और मजदूरों को इलाज के लिए सीएससी बंडा भिजवाया। In yet another accident involving workers migrating back to their villages, 1 man was killed when a truck with 50 migrant workers from Hyderabad to Uttar Pradesh's Gorakhpur met with an accident in Telangana. The deaths on the road came even as the centre ordered states to stop migrants travelling on trucks or walking. It said it was the responsibility of states to see that they can get onto Shramik trains or state-run buses. Bureau Report, India Today. These are not one-off incidents. Pushed to the edge by lockdowns, thousands of migrant workers are heading back to their homes, some on foot, some on bicycles, but many others are looking for a spot on trucks. The truck journey, however, comes at a price. There is a trucker mafia that is now asking the distressed workers to shell out thousands to get to their homes, irrespective of their safety. Our special report tonight exposes the trucker mafia. कितने लोग हैं और ये? In the belly of truck-mounted concrete mixers, on bicycles, a desperate trudge of hundreds of miles. India Today goes behind these agonizing pictures at the transit stations of human cargo. Dozens of migrant workers from Bihar in a dingy shanty at Delhi's Azadpur Mandi. Waiting for a truck, sitting cramped, with flip-flops on their feet and bags on their laps. This trucker has charged between 2,500 to 3,000 rupees per passenger.
A suffocating 20-hour journey ahead in a container. No ventilation, leave alone social distancing. When our reporter, posing as a factory worker, probed the truckers, this is the deal he was offered. पैसा कितना देवे बोलते तू तो देव 2500 मुजफ्फरपुर तक। तो रास्ते में कहीं फंसे हुए ना हो अपना महुआ तक बड़ी हुई लिए जंदाहा तक हुई लिए ताजपुर तक बड़ी हुई लिए। कितने लोगों को बैठा के 60 आदमी खुल के रही को और खुलते हाजीपुर के लिए महुआ देखो खुल गई 2 खुल गए। अच्छा 2 गाड़ी आज भेज दी? हाँ दिन में? हाँ। Misery pushes the country's workforce in the unorganized sector to the edge. With Shramik Express trains being the only mode of transport, that too on demand from state governments. This is how millions of bedraggled migrants opted to travel like freight, shelling whatever cash they had to be able to get back to their villages. This man is another trucker bound to Kolkata from Delhi's Azadpur Mandi. He shuttles between the two cities, ferrying vegetables, fruits, medical supplies. But during the lockdown, he also carried stowaways. This is how he transported them from Delhi to as far as Jharkhand. Migrants lying flat on top of the truck's tarpaulin roof. पहले कैसे लेके गए थे आप? पहले गए थे ऊपर लेटा के गए थे। कहाँ ले गए थे? बरई। बरई कहाँ पड़ता है? बरई झारखंड। The truckers offered the same space to India Today's reporter for a tedious journey to Kolkata. भाई देखो 7 लोग हैं हमारे, 7 लोगों के कितने में? हमने आपसे प्रति आदमी 3500 रुपए बोला था। अच्छा। आपको जो खुशी लगे वो दे दीजिए, हम चल देते हैं। हम भी सारे आदमी जो हैं तो कलकत्ते ही जाएंगे ना। हाँ सारे कलकत्ते। देखो अपने बंदे को आप समझा देना, वहाँ पे आराम से मोबाइल अपना स्विच ऑफ करके लेट जाए, कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल क्यों स्विच ऑफ करना है? पता लगे साइलेंट कर देंगे। पता लगेगा कि बैरियर लगा है। उनका मोबाइल उधर चिल्लाने लगा। पुलिस वाला बोल दिया अबे मोबाइल ऊपर कहाँ से चिल्ला रहा है, सब ऊपर रहेंगे। ऊपर छत पे? हाँ लेट जाओ आराम। तो छत पे फिर वो कैसे पकड़ में नहीं आएगा? छत पे कहाँ पे पकड़ के आएगा? Just recently, this trucker shipped in vegetables from Farrukhabad in Uttar Pradesh to Shahibabad in the national capital region. From here, he shipped out human cargo. Migrants lay down on the floor of his truck. Tarpaulin rolled over them like a large opaque screen. That is how they travelled amidst this lockdown. पिछली बार हम 6 बंदे लेके गए थे, तो इस हिसाब से लेके गए। ये त्रिपाल थी, त्रिपाल के नीचे बंदे को त्रिपाल उड़ा दी थी, तब लेके गए। और उसमें सुला दिया था उन लोगों को नीचे? हाँ सुला दिया। अच्छा, तो 10 बंदों को सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी? तो कुछ नहीं, तो इधर उधर मुंह निकाल लेते हैं, पता ही नहीं लगता है। तो वो कोई ऊपर चढ़ के थोड़ी देखता है, ऐसे टोर्च लगाते हैं। अच्छा। तो कितने पैसे लिए थे पिछले बार जो लेके गए? हमने 1000 रुपये सवारी ली थी। 1000 रुपये सवारी? कहाँ छोड़ा था? उन्हें छोड़ा था अलीगढ़। An alarming social emergency. And a glaring spotlight on the plight of the country's demographic dividend. So far, around 800 trains carrying migrants have run over the past fortnight. Around 100 are now operating every day. The Prime Minister Cares Fund has also earmarked rupees 1,000 crore for the migrant labour. But for the workforce rendered jobless and waiting to go home for 50 days, patience is running out. Special report by Mohammad Hizbullah for India Today's Special Investigation Team.
Let me raise the big questions tonight. How do you then take migrant labor back safely home? Are the trucks simply too dangerous? What is the real solution? How can the government now win the migrants' confidence? Has the centre and the state governments washed their hands of this entire issue? There's some of the questions I'm going to raise. Anil Deshmukh, the Home Minister of Maharashtra, happy to have you on the show. Siddharth Nath Singh is the UP Cabinet Minister. Nikhil Des, founder, member of Mazdoor Kisan Shakti Sangathan. But I want to first come to you, Anil Deshmukh ji, because a lot of these trucks are going from Maharashtra. 2 days ago, we exposed how from Bhiwandi, people were taking trucks to Uttar Pradesh. No one was stopping them, and there were 70, 80 people packed inside a truck. कैसे इन ट्रक्स की जगह उनको आप ट्रेन से क्यों नहीं भेजते हो? क्या वजह है कि इनको ट्रक से जाना पड़ रहा है? अनिल जी देखिए, मैं हकीकत आपको बताना चाहता हूं कि हम इनको ट्रेन से भेज रहे हैं, इनको बसेस से भेज रहे हैं, लेकिन जिस तादाद में हमको ट्रेन की उपलब्धता हो रही है, दिक्कत ये जा रही है कि हम जब पूरी यादी तैयार करके रिस्पेक्टिव स्टेट को जो भेजते हैं, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, कर्नाटका है, जो भी स्टेट है वहां से उनको भेजते हैं, तो वहां से उनका एनओसी आने के बाद हमको ट्रेन मिलती है। हमारे यहाँ पे पूरी तैयारी हो चुकी है, पूरी हर एक शहर में हमारी लिस्ट बन चुकी है कितने लोगों को भेजना है। हम वो लिस्ट समझे आप उड़ीसा की बात करते हैं या उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, और रिस्पेक्टिव स्टेट में भेजने के बाद वहां से एनओसी आता है कि ठीक है 2 ट्रेन भेजो। जैसे इनको एनओसी आती है, हम तुरंत रेलवे प्रशासन से ट्रेन की मांग करते हैं, उनकी ट्रेन आएगी तुरंत भेजते हैं। अभी तक आज सुबह हमने 191 ट्रेन भेजी थी। आज अभी का 9 बज रहा, अभी तक हमारी 234 ट्रेन महाराष्ट्र से गई है। उसमें करीबन 2,80,000 श्रमिकों को हमने अलग अलग स्टेट में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, इन जगह भेजा है। लेकिन क्या अनिल देशमुख जी, आप मुझे कह रहे हैं कि इतनी बड़ी महाराष्ट्र सरकार या इतनी बड़ी केंद्र सरकार, सीएम फंड है, पीएम फंड है, क्या आप सबको ट्रेन में नहीं भेज सकते? देयर आर इनफ ट्रेन शॉली इन दिस कंट्री कि सभी माइग्रेंट्स को भेजे, या कम से कम रेगुलर बसेस में भेजे? क्या इतने बसेस नहीं है हमारे पास? हमारे यहाँ पे हमने 5,000 बसेस लगाई है। 5,000 बसेस महाराष्ट्र में इनको वहां पे भेजने की लगाई है। पहली इंपॉर्टेंट बात आपको एक मैं एग्जांपल देता हूं। वेस्ट बंगाल में अभी तक उन्होंने हमको परमिशन नहीं दिया था। वेस्ट बंगाल की यादी हमारे पास तैयार है जी। वेस्ट बंगाल में आज पहली ट्रेन माननीय शरद पवार साहब ने वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता दीदी से बात किया, हमारे मुख्यमंत्री साहब ने ममता दीदी से बात किया। उसके बाद में आज पहली ट्रेन आज 8:12 पे वेस्ट बंगाल की गई है। हमारी पूरी तैयारी भेजने की, सिर्फ रिस्पेक्टिव स्टेट से हमको एनओसी मिलने के बाद ही ट्रेन रेलवे प्रशासन वहां पे ट्रेन देता है। और पैसे कौन देगा? क्योंकि पहले ट्रेन पर भी हमने एक्सपोज किया था किस तरह से कुछ राज्य पैसे मांग रहे थे। क्या आप मुझे आश्वासन दे सकते हैं जो ट्रेन से जाएंगे या रेगुलर आपके स्टेट बस से जाएंगे, उनसे पैसे नहीं देंगे आप? एक पैसा भी हमारा राज्य शासन, महाराष्ट्र शासन ले नहीं रहा है। पूरा किराया हमारा महाराष्ट्र शासन दे रहा है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री साहब का जो सीएम रिलीफ फंड है, उन्होंने हमको 55 करोड़ रुपए दिया है। अभी बाकी हमारे पास, हम पूरा किराया, एक भी हम श्रमिक से पैसा बस का नहीं ले रहे, एक भी श्रमिक से हम पैसा ट्रेन का नहीं ले रहे, और पूरे लोगों को वहां पे बिना टिकट के हम वहां पे उनके राज्य में भेज रहे हैं। हमारी दरखास्त एक ही है कि रिस्पेक्टिव स्टेट की जल्द से जल्द परमिशन आना चाहिए। अभी 2 स्टेट का सिर्फ प्रॉब्लम ज्यादा है, तो छत्तीसगढ़ और बिहार। आज हमको छत्तीसगढ़ की, बिहार की रोज हमको 10 ट्रेन चाहिए, लेकिन 4-5 ट्रेन ही मिल रही है। उसी प्रकार वेस्ट बंगाल में जो है, वेस्ट बंगाल की हमको रोज की 10 ट्रेन चाहिए। इतनी बड़ी तादाद में यादी तैयार है हमारी, उसके बावजूद हमको सिर्फ एक ट्रेन, क्योंकि ट्रेन नहीं है इसलिए आप कह रहे हैं लोगों को एक तरह से ट्रक से जाना पड़ रहा है। नहीं, आप मेरी बात समझिए जी। हाँ, हमको जब तक एनओसी स्टेट से मिलती नहीं है, तब तक रेल प्रशासन हमको ट्रेन देता नहीं है। उनकी भी बराबर रेल प्रशासन की। Siddharth Nath Singh, Uttar Pradesh is the state to which most of these migrants are traveling. Today this accident has taken place in Auraiya. The fact is that this could have been done 6 weeks ago. When the lockdown started, if state governments had spoken to each other, it was possible perhaps to organize an effective public transport system. Something has gone horribly wrong. Well, Rajdeep,
UP was the first state to announce that we will take all our migrant laborers back. And till date, 10 lakh migrant laborers have entered Uttar Pradesh. Now the issue is that as the number of trains, Uttar Pradesh from it's about 1100 trains so far have run by the central government, and 400 trains have been booked, and they have been by the Uttar Pradesh government by paying the money, which is the requisite money of the to be paid by the UP government. We have more than 10,000 buses plying 24/7. So all this thing is being done. Now, I will not go into a state, but I would like to tell you what we are doing. Rajdeep, no, because sir, just to correct you, allow me. Okay, go ahead. You're very patient with Maharashtra. That's your state, but be patient with Uttar Pradesh also. Please. Okay, sir. That's my request. Sure. We have about 20 lakh migrant laborers coming from West Bengal, Odisha, Jharkhand, particularly, largely. Now, they would also like to go to their states, but you haven't heard anything coming from Uttar Pradesh. Why? Number one, we have paid them 600 crores in 2 tranches of 1,000 and 1,000 beginning from 17th of April. We have distributed in 3 rounds to 3.5 crores per laborers in Uttar Pradesh the ration. We have arranged certain medical facilities wherever they are living. So all this thing to put together, they're quite happy not to leave Uttar Pradesh and go to their state. No, the now, reason that's important. You are right. That's an important point. But a week ago, we had shown how migrants. Sir, we had shown how migrants from Gujarat were going to UP and were being charged. They were being charged at the stations in Gujarat. So I just want to understand, are you telling me that none of the migrant labor who are coming into your state, whether by bus or train, are being charged? Well, as far as I know, Rajdeep, when the trains, when they are booked by through the central government by the respective state where the laborers are coming, because they register through a portal. Now we are required to pay money. We do pay the money. So what happens from Gujarat or Maharashtra or any other state, I will not be able to speak. Okay. As far as we are concerned, we are doing it. Whoever comes into Uttar Pradesh, we are taking care of them. We keep them in quarantine as prescribed. We give them 15 days of ration before leaving the quarantine. We give them 1,000 rupees there also. So we are taking care. We have another committee which is looking after the jobs. In under Manrega, as of this morning when I'm speaking to you, 30 lakh people on a daily basis have been registered. Okay. So, Nikhil Day, you don't hear from Uttar Pradesh any crisis coming out. Siddharth Nath Singh is saying they've been able to take care of the migrants. Anil Deshmukh is saying, look, we are happy to take to send the migrants by train, provided the respective other state agrees to accept them. Where do you see the reality then? Reality, Rajdeep, is very, very sad that we have to look at one state trying to coordinate with another and yet with another. Even now, as we hear the 2 ministers from the 2 states speaking, it's a question of NOCs from one state to another. We are in one country. For 50 days, we have understood that people want to go home more and more as every day passes, as every day becomes more tortuous for these people. And we have actually, if you ask them, there are these war rooms from the central government down to the state government, down to districts and blocks. Do it on a war footing. Why shouldn't state transport, if the trains are not enough, use state transport, buses of every single state, transport people by bus. Better than those trucks are the buses, and let the buses take people to their destinations. Surely the workforce of India deserves to be taken home in a dignified, safe manner. Surely if they are traveling by our buses and we can get coordination between all these states and the center cannot simply leave it to the states and say, we are now saying yes. The center spent a long time saying yes one day, no the other, stop them where they are the third, let them go a little bit.
orders that were contradictory all the time while these people were suffering. And between states also, this business of waiting for NOCs to come from one state and another, and then the railway to be able to move, this needs to be done much quicker, much more smoothly, so that people have some kind of faith that, okay, we have registered, 20 lakh people, for instance, have registered in Rajasthan. They've not heard an answer because we just don't have the capacity to cope. We have it, but we have created a bureaucratic mess for ourselves in the transporting of our labor home. You know, that is the question, अनिल देशमुख जी, क्या आप मानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी बहुत है? आज भी आप कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल ने परमिशन नहीं दी है. क्या कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि दोनों राज्यों के बीच में ज्यादा बातचीत होनी चाहिए, एक नोडल सेंटर होना चाहिए, ये ब्यूरोक्रेसी की नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, इससे मामला और बिगड़ जाता है, ये आप मानते हैं? नहीं, देखिए राजदीप जी, कैसा है कि वेस्ट बंगाल की आज पहली ट्रेन 8:12 के सुबह गई. हमारे माननीय शरद पवार साहब ने, माननीय मुख्यमंत्री साहब ने ममता दीदी से, माननीय मुख्यमंत्री से बात की, उसके बाद उन्होंने रोज की एक ट्रेन हमको अलाउ किया है. सर लेकिन ये कैसे चलेगा? क्या आप मानते हैं कि एक सेंट्रल नोडल एजेंसी होनी चाहिए? शरद पवार को क्या वजह है उनको बात करनी, ममता बनर्जी? ये एक सेंट्रल एजेंसी से होना चाहिए, जितने भी ट्रेन हैं सबको दे दो, ये समय है लोगों को घर पहुंचाने के लिए. बिल्कुल बिल्कुल, हम भी मानते हैं, ये तो हमारा महाराष्ट्र का उत्तरदायित्व है. हम तो आज मैं आपको बताता हूँ, आज हमको रोज की 100 ट्रेन भी मिलती है, 100 ट्रेन भी मिलती है, तो हम उसका पूरा किराया भरेंगे और सबको यहाँ से अच्छी तरीके से भेजेंगे, पूरा उनका खाने पीने का इंतजाम करके, साथ में उनको खाना देके उनको उनके राज्य में हम भेजने की हमारी पूरी तैयारी है. उसके लिए हमने पूरा इंतजाम करके रखा है. प्रॉब्लम है कि वहां के स्टेट का एनओसी मिलना. सर एक देश है, सर जैसे निखिल देव कह रहे हैं, एक देश है, राज्य अनेक है, लेकिन एक देश तो एक है. ये नागरिक सब भारत के नागरिक है. सर मेरी भी मांग है इसमें है कि इसके एकाधिकारी केंद्र शासन ने नोडल एजेंसी इसमें रखना चाहिए, ताकि सब राज्य से कोऑर्डिनेशन करके अच्छी तरीके से इसका प्लानिंग हो, अच्छी तरीके से उसका नियोजन एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रेन हर एक स्टेट में जाना चाहिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू आर मेकिंग देयर मिस्टर देशमुख. ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें जानी चाहिए. ये कब होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि तब तक लोग ट्रक्स में जा रहे हैं. पीपल आर गोइंग बाय ट्रक्स, ओवरक्राउडेड ट्रक्स. दिस नीड्स टू हैपन सूनर रादर देन लेटर. I appreciate all three of you joining us, telling us what the position on the ground is. Siddharth Nath Singh, Anil Deshmukh, as well as Nikhil De. Thank you all very much for joining us. Let's hope that we can resolve this issue of transporting our very own citizens back to their homes without the bureaucracy of no objection certificates required from each state government. It requires a central nodal agency at the moment to just get the system going. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.